As the security forces cornered and fought terrorists in 4 simultaneous anti-terror operations in Jammu and Kashmir. Now this development that is now coming to light after the terrorist who has been identified as Usman alias Chota Walid. He is a Pakistani Lashkar-Toiba terrorist who was said to be previously involved in other terror activities as well. He was trying to revive the overground network in Kashmir, and with this development that in Anantnag the forces however managed to achieve a success. They gunned down 2 terrorists. As sources say, these 2 terrorists are also believed to be from Pakistan. In Bandipora, search operations that are taking place for the terrorists who fled into the forest area after opening fire. And in Budgaon, on Friday night, in the 5th targeted attack on non-locals, 2 migrant workers from UP were also shot at by terrorists. These relentless anti-terror operations, the forces are sending out a clear message that there will be no let-up in the fight against Pakistan-backed terror, even when it comes to in Jammu and Kashmir, as the IGP is saying that the forces will continue to hunt them down and will neutralize them. ये जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी को एक स्पेसिफिक इत्तला मिली थी और उस इत्तला को डेवलप करने के बाद जो खानियार में थांग मोहल्ले का एक कॉर्डन सर्च किया गया। जब कॉर्डन के दौरान जब हम लोग वहाँ पे सर्च और पार्टीज क्लोज थी तो अंदर से फायर का जो है वॉली हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी पे आया। तो उसके बाद एक ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो आज अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी इलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था उस तौर पर हुई है। और इसमें सुरक्षा बलों के जो 4 जवान हैं उनको इंजरीज आई हैं। 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और 2 सीआरपी के जवान हैं। Srinagar Khanyar encounter has ended with the killing of 1 militant. This operation started early morning today. We continue to report from the same spot where this operation in fact started early morning today. Security forces had input about the presence of 1 or 2 militants hiding in this particular area. Following that, security forces initiated a coordinated search operation. During that search operation, militants opened fire on army, and in response to that, security forces launched a massive operation, and after 10 hours, security forces have managed to eliminate one of the militant who is said to be a Pakistani top LET commander and was wanted in multiple terror incidents. Now, security forces had also success in South Kashmir's Anantnag district, where 2 militants were killed in Larnu area of the district. Security forces there also had input about the presence of terrorists. They were moving in a forest area. Operation was initiated, and that in that operation both of them were killed. Arms and ammunition have been recovered from both the encounter spots, and all 3 militants killed in these 2 operations are believed to be Pakistani militants. Now the security forces will certainly go for the investigation, and identification will be done. Now, even as the security forces are leaving no stone unturned to keep the people of Jammu and Kashmir safe from these dastardly terror attacks by Pakistan-backed terrorists, there's shameful politics, however, that seems to be playing out over these terror attacks. Since Omar Abdullah took charge as Chief Minister, 5 targeted attacks have taken place in Jammu and Kashmir, with terrorists mostly harming non-locals and migrant workers. Now, the NC patron, Dr. Farooq Abdullah, who's in the past made many pro-Pakistan statements, he is now ascribed political motive to the terror attacks in Kashmir. As per Farooq Abdullah, this could be a plot to destabilize Omar Abdullah's government. He also says that terrorists shouldn't be killed, they should be caught alive so that the truth behind the plot is unraveled. इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस ग्रिड है उसमें कहीं पे कुछ वीकनेस की भी निशानदेही हो रही है इन सब चीज़ों की वजह से। तो इंटेलिजेंस ग्रिड को भी बीफ अप करने की बहुत ज़रूरत है।
हमने ये बात कही कि क्योंकि ये सब कुछ सही नहीं दिख रहा है, इसमें देयर इज समथिंग फिशी इन इट, तो इसलिए इसका एक इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए जिससे ये पता चले कि इस सब के पीछे कौन इस सब के पीछे है. Now, another top India bloc leader, the NCP SP chief Sharad Pawar, also seems to be giving some credence to what Farooq Abdullah is saying. Sharad Pawar says that Farooq is the tallest political leader in Jammu and Kashmir, and if he is making certain points about terror attacks, the Home Ministry must take it seriously. Farooq Abdullah, इसमें जम्मू एंड कश्मीर की सबसे तॉलेस्ट पर्सनैलिटी है. उनकी पूरी जिंदगी जम्मू कश्मीर के मुल्क की सेवा करने में गई है. इनकी इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के बारे में मेरे मन में कोई शक नहीं. और जब इनके जैसे आदमी लीडर ऐसी स्टेटमेंट देता है तो भारत सरकार ने पर्टिकुलरली होम मिनिस्ट्री बड़ा सीरियसली लेने की आवश्यकता है. और ऐसी स्थिति हो तो कैसे सुधार हो सकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए. Now, the BJP is slamming India bloc leaders for indulging in politics of terror. They say comments of Farooq Abdullah will only give Pakistan an alibi. फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है. उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए. और रही बात उनकी सरकार को अस्थिर करने की, तो अब उन्हें यह समझना चाहिए कि ये वही ताकतें तो नहीं है जिनसे कभी आप सत्ता में आने के लिए गलबहियां करते थे. परोक्ष रूप से आज उन्हीं ताकतों का आपको सामना करना पड़ रहा हो. क्या ये शक सत्य नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला साहब क्या क्या बोले थे कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए, हम चीन से भी सब लेंगे 370 रिस्टोर करने के लिए. तो इसलिए मैं सिर्फ उनसे यह कहना चाहता हूं कि राजनीति में देश हित और समाज हित को रख के राजनीति की जानी चाहिए. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को जानते हैं, ये आतंकवाद, ये बम बंदूक पिस्तौल गोलियां ये पाकिस्तान से आ रही हैं. सारी दुनिया जानती है, खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं ये पाकिस्तान की ओर से हो रही है. इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें आतंकी संगठन शामिल है. इसमें कौन सी जांच है? हम सबको मिलकर एकजुट होकर हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए. ये जो प्रवृत्ति है कि जब देश के ऊपर कोई आतंकी घटना होती है तो कुछ लोग राष्ट्रनीति के विषय पर भी ओछी राजनीति करते हैं. परिवार फर्स्ट, वोट बैंक फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट को रखने की राजनीति करते हैं, ना कि नेशन फर्स्ट को. इससे बचना चाहिए. क्या इस प्रकार के बयान इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो आतंक के आका है उनको क्लीन चिट मिले, उन्हें संरक्षण मिले? हमने देखा है कि ये विशेष इकोसिस्टम, खासकर कांग्रेस का इकोसिस्टम, किस प्रकार से पुलवामा पर, 26/11 पर, पूंछ पर, समझौता पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए एक पैर से खड़ा होता है और भारत की एजेंसियों पर, भारत पर ही सवाल खड़े कर देता है. Well, Pradeep is with us right now. Pradeep, was there ever a doubt when it comes to such terror attacks that who could be behind this? You're absolutely right. There is no doubt. Everybody knows who is responsible for death and destruction for the last more than 3 decades. And even Farooq Abdullah is well aware of the fact because he had been the chief minister and also the union minister, and he has been privy to all those documents that clearly indicates that how Pakistan had been pushing into terrorists into this side of the border. See, if you look at the activities during the last few days, first they tried to target democracy because they were completely rattled to see large number of Kashmiris coming out to vote and elect representative of their choice, because Pakistan never thought that this is going to happen. But people of Kashmir Valley, they were able to give a tight slap into their face by coming out in large number voting for democracy. And when they could not scuttle democratic process, now what the Pakistan-sponsored terrorists are trying to do, they are trying to target development. And to target development, they are trying to generate fear by targeting those innocent unarmed laborers, because they feel that way the development process will start and the laborers will start fleeing from Kashmir Valley. But that's one of the reasons that people are asking question why Farooq Abdullah is smelling a rat
that and trying to give a clean sheet to Pakistan and Pak proxies. Right, This is because great. He according will to only him, be these providing terrorists shouldn't be killed, shouldn't be neutralized. They should be rather captured and be asked exactly who's behind of carrying such terror activities. Well, the answer is, of course, Pakistan. Thank you very much for the moment, Pradeep, for joining in.